start with the formal introduction. I think I have with me on the panel Ashish Agarwal, who is AIR 36 July 21 CA final exams. He's currently working at Marico. I also have with me Shubham Malhotra, who is AIR 1 CA Inter and AIR 8 CA final, and he is working currently at BCG. I am Divesh, AIR 6 Inter and AIR 31, AIR 13 final. So I am working at BNN company. By the way, I think there was one question that I had seen in the survey form. Say rankers he choose in are there in the panel as a speaker. Actually, it's definitely not the case. ऐसा कुछ नहीं है कि we are rankers, which is what makes us competent to speak on the topic. Nothing of that sort. It's just that we are a good group of good friends, and it is a coincidence that we are rankers. That was not the very objective of it. So I think having said that, a bit of a background, now I think we'll directly get started with whatever questions we had, and we'll directly start sharing with our experience of our study, how we planned it. I think I'll let Ashish go first with the whatever he has to share with us. Shubham, I think you can pin Ashish so that sure. Speaker view करके उसको pin कर. Spotlight for everyone. Yeah. So maybe we can start with. So not wasting much of your time, we'll get directly to the FAQs as Divesh already mentioned. So first question that came across us was, in case of less number of leaves, how do we prepare? So a single word answer to that will be planning. So you need to completely plan your schedule. It's not a simplified defined plan that I can give you ki 1 mahine mein ye karo, 2 mahine mein ye karo, 3 mahine mein ye karo. Because everyone has a specified leave schedule, everyone has a specified speed, specified way of learning. So what you do is you just take the period that you have at hand, just divide it in such a way that you at least get the requisite number of revisions. How much number, we'll talk about it later. It's already there in the question. So so that you get requisite number of revisions, you get requisite confidence on your subject, and then you can appear for it. So that's how you can manage in less number of leaves. Apart from that, second question was retention of theory subjects. So yeah, that's a great problem that everyone has, because in practicals you always have concepts. You can remember the concepts. Concepts can be applied, but theory cannot be directly applied, and that is where the problem of retention comes in. Okay, so how do you solve this retention is with something that is unique. So how do you make something unique? Is if you have some mnemonics. So that mnemonics is a simple word that can help you say make the things unique, and then you will be able to remember things. So that is one thing you can do. So say you have a set of words, you make a mnemonics out of that, and start remembering that mnemonic, because that will help you say recall. So recallability is what it will help you with, and you will easily be able to bring down answers in that case. Secondly, what I suggest is focus on only keywords, because obviously sentences make the things much difficult to understand, to learn, and to say present. So that is where you need to bring the content much down to say just keywords or some key phrases. That is what we can do. What I used to do, मैं जो करता था, मैं पैराग्राफ्स रहते थे, मैं पैराग्राफ्स को कट कर देता था विद इन द बुक को गंदा कर देता था पूरा. आई यूज्ड टू कट द पैराग्राफ्स. मैं वहां पे एक वर्ड में, 2 वर्ड में, एक फ्रेज में उस पैराग्राफ को समराइज कर देता था, बिकॉज आई नीड टू हैव इट फॉर टू पर्पसेस, टू फोल्ड पर्पसेस. फर्स्टली कि एट द टाइम ऑफ रिविजन, जब वो 1.5 डेज का विंडो रहेगा, आई कैन नॉट रीड दोस पैराग्राफ्स, आई कैन जस्ट रीड माय फ्रेज. सो दैट विल ब्रिंग डाउन माय कंटेंट. दैट इज व्हाट इट हेल्प मी. एंड सेकेंडली रिटेंशन में हेल्प करता था, बिकॉज इट वाज माय ओन हैंडराइटिंग. एज अ सी द फर्स्ट वर्ड, मेरे को पूरा वो चीज याद आ जाता था. सो दैट इज हाउ इट कैन हेल्प यू आल्सो. So that is what you can do. Third question is, what if plan takes a hit? So obviously planning, मतलब बचपन से बुक्स में पढ़ा होगा आपने, planning is a continuous exercise. So now you will understand कि how planning is a continuous exercise. This cannot be limited at a point. मतलब आज आपने plan बना दिया, आप execute कर दोगे, इतना महारथी कोई नहीं है. So we make plans for everything, but those fall, those get a hit, and they come to a conclusion. So आपका conclusion, आपका defined end is clear कि आपको क्या करना है. आपको एग्जाम के लिए अपीयर करना है to the best of your possible powers. So that is the complete conclusion. उस conclusion को achieve करने के लिए plan बनाया. So just try to revise your plans. अगर आपने ना से 10 days का window पकड़ा थर्ड सब्जेक्ट के लिए, आपने 2 सब्जेक्ट क्रॉस कर दिया, and you have done 25 days for that subject. उस केस में what you have is the other say 2 subjects or other 6 subjects you have in hand. You need to say shrink those subjects in a way कि आप उसको accommodate कर लो accordingly, and आप ना time को वहाँ पे fill in कर लो. So that is how you need to continuously change plans. Just I'm going in a quick manner for all the FAQs, because I'm giving you a short gist of everything. Now, if there are some any specifications, the reason of bringing it this video in form of a conversation, in form of a call, is कि we'll give you a gist, so that out of the gist, अगर आपको कोई follow up questions है, you can get it clarified. Because otherwise we would have made a 15 minutes video and you could all have seen that. But it is just the purpose कि आप उससे infer करो, and what is your exact problem, maybe you can put that forward, and then we'll get into a good conversation.
Okay, so that is a very simple answer to what do you do when it takes a hit. And also secondly, so my own plan took a hit. How did it happen is, it was just 1.5 months to my exams. So 1.5 महीने बचे थे एग्जाम के लिए, and there was a sudden medical emergency at my place. So उसके वजह से जो 1.5 months का पीरियड था, 1 month of my whole thing went in that medical emergency. Okay, so I just had 15 days remaining instead of 45 days in my bucket. So मैं वो 30 दिन कुछ नहीं पढ़ पाया था, मेरा लिंक टूट गया था, everything happened, and मैंने just वो last के 15 days पढ़ा था. So how did I adjust my plan was very simple in that case. 15 डेज में मैंने अपना जो 30 डेज का पीरियड था, जब मैं कुछ नहीं कर पा रहा था ड्यू टू अ मेडिकल इमरजेंसी, आई डिड अ सेल्फ स्वॉट एनालिसिस. सो ऑलवेज इन माय प्लान आई हैव अ स्वॉट एनालिसिस से चेकर और अ परफॉर्मेंस इवैल्यूएटर. सो मैंने सब सब्जेक्ट की एक बार है ना सेल्फ टेस्ट दे रखे थे, मॉक टेस्ट दे रखे थे. सो आई हैव सेल्फ से अपीयर्ड फॉर द टेस्ट, आई सेल्फ चेक दोस टेस्ट एंड आई हैड इवैल्यूएशन कि मेरे को ये सब्जेक्ट में फोकस इशू है. सो उसमें विद इन दैट 15 डेज पीरियड मैंने अपने 45 डेज के प्लान को सकम किया उसमें, एंड बेसिस ऑन माय वीकनेसेस आई जस्ट फोकस्ड ऑन द वीकनेसेस फॉर से 3 days, and then I took the exams. So that is what you can also do in such situations. Next, how many number of revisions? So again, ये definite answer नहीं है, but what I always recommend is 2.5 revisions. What is 0.5? दो तो सबको समझ आ रहा है. So 0.5 is important parts, important subjects, because you need to understand कि volume को खेलने के लिए you will have to manage things with preference order theory always. So आप preference बनाओ, क्या क्या चीज का preferences है, what is important to you. So कोई टीचर को कुछ और इंपॉर्टेंट होगा, मेरे लिए कुछ और इंपॉर्टेंट होगा, शुभम के लिए कुछ और इंपॉर्टेंट होगा. सो व्हाट यू कैन डू इज, आप अपने हिसाब से एक प्रेफरेंस लिस्ट बनाओ, किसी की कॉपी मत करो, एंड बेसिस दैट प्रेफरेंस लिस्ट जो आपके टॉप थिंग्स है, टॉप सब्जेक्ट्स है, टॉप टॉपिक्स है, just cover those in the 0.5 period of revision. You will save on time, you will hit the best, and maybe you will get good results. So that is what you can do. Lastly, the question that I'm addressing is compromising sleep. So should you compromise sleep for your results? Should you compromise sleep for becoming a CA? So ideally, if that could bring you to the results, I would have said yes. मतलब मत सो, आप अगर 24 घंटे जग सकते हो और उसकी वजह से आप CA बन सकते हो तो बन जाओ. I would have literally said a yes. But that is not a reality because we are humans. आपका ना brain stop हो जाएगा. As already हमने say already before starting the video we already took it that consistency is important. You cannot run a vehicle for 24 hours, 48 hours continuously. It will get heated up. So similarly is the concept कि anytime. So this concept applies to everything in your life. Maybe आज आप एक डाइट प्लान भी कर रहे हो ना, उसमें भी this concept applies. The concept is sustainability. आप जो भी प्लान बना रहे हो, make it sustainable. आपको 2 दिन या 3 दिन उस पर नहीं टिकना है. Because for 2 days, 3 days, 15 days, you can do extreme things, but not for a period of 4 months, for a period of 6 months, 3 months. That time you will not be able to do extreme things. You will be able to do sustainable things. So आप अपना plan sustainable रखो, sleep को accordingly manage करो, what is required for your body, and then you say plan things. So make sustainable things. Also, sleep allows in some specific things. 2-3 चीजों में help करेगी. Processing time. So once you gather all the concepts, ना आपके concepts को process होने में, that is what I feel. I don't know the science behind it. That is my personal own feeling. कि processing time कुछ लगता है, sir वो processing time में sleep will help you. वो help करेगा आपको to settle down things. So आप इतना सारा concepts in ले रहे हो. There is no outflow. There is just inflow. So once इतना सारा inflow है ना, let it settle down. So just give it time, let it settle down. And next is आपको energy मिलेगी next session के लिए, next day के लिए. Because a refreshed mind would absorb much things. Once you say get into repetitive things, then you will not be able to absorb things, and say ignorance बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी. So that is it, how it will help. Maybe Shubham, you can continue from here. Sure, thank you, Ashish. I'll take it up just a second. Yeah, you added to spot. Yeah, so basically I'll be taking up few of the FAQs which Divesh sent me. One of them I have already covered like before the video started, but I'll like again repeat the same, is how you can be consistent in your study leave. So सबको almost study leave same ही मिलती है, and आपको 4-5 months की भी study leaves अगर मिल रही है तो it's good enough to even get a rank, right? But the question is आप उसमें consistently कैसे पढ़ सकते हो? So one of the I think it was Anshu who asked कि एक दिन पढ़ाई हो रही है, एक दिन नहीं हो रही है, and it happened with everyone, right? तो उसमें कैसे करोगे? Make realistic plan. If you are planning that आप 14 hours पढ़ोगे, that is not going to happen, right? So plan ही करो that आपको 10 hours पढ़ना है, and then stick to it. अगर आप सोचोगे एक दिन 14 hours पढ़ोगे, आप अगले दिन 6 भी नहीं पढ़ पाओगे, because you will be so exhausted. So make realistic plans and stick to it. Give yourself 21 days. It is said that it takes 21 days to form a habit. So अपना 21 days का horizon रखो, उसमें make sure that you are studying 10 hours each. किस दिन 11 हो गया, किस दिन 9 हो गया, किस दिन 8.5 हो गया, चलेगा. But 8.5 से कम मत जाने देना, for those 21 days. And if you can like do that for 21 days, उसके बाद आप देखोगे कि it will become a habit and बहुत easy हो जाएगा manage करना. So this is how you can be consistent.
सेकंड इज लाइक रूटीन कैसे बनाना है ना हमारे ना टेलीग्राम चैनल देखो और इतने सारे यूट्यूब हमारे टीचर्स हैं जो भी हैं नॉट नेमिंग देम वो अपने प्लान्स निकाल देते कि दिस शुड बी योर रूटीन आप इतने बजे सो के उठो इतने बजे करके देखो प्लीज 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 डोंट फॉलो दैट मैं अगर अपना भी रूटीन अगर निकाल के दे दूंगा कोई अपने इंटर का निकाल के दे दूंगा फाइनल का निकाल के दे दूंगा दैट माइट नॉट वर्क विद दिवेश दैट माइट नॉट वर्क विद आशीष वो रूटीन फॉलो करके फेल भी हो सकता है एंड आई एम डैम श्योर मैं अगर दिवेश का रूटीन फॉलो करता मैं फेल हो जाता बिकॉज आई एम नाइट पर्सन दिवेश इज अ मॉर्निंग पर्सन मैं पढ़ ही नहीं पाता सो आप क्या करो हाउ आई यूज्ड टू मेक अ रूटीन इज मेरे लिए माय फर्स्ट प्रायोरिटी वाज स्लीप और कुछ नहीं भाई पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ो सोना इंपॉर्टेंट है तो अपने सोने का टाइम अलग रख लो आपको देखो आपको कितने टाइम पे सोना है फिक्स दैट ब्लॉक दैट पीरियड इन योर टाइम टेबल एंड देन बाकी टाइम में मैनेज करो कि आपको कितने आवर्स पढ़ना है सो स्टडी लीव के टाइम में ना क्या होता है एक पॉइंट के बाद सैचुरेशन आने लग जाता है सो वन लिटिल ट्रिक व्हिच आई डिड वाज दैट आई विल डू समथिंग जो लोग मना करते हैं स्टडी लीव में करने के लिए लोग मना करते हैं नेटफ्लिक्स मत देखो टीवी मत देखो स्पोर्ट्स मत खेलो सो आई लाइक यार क्यों मैं मना करूं सो आई यूज्ड टू वॉच 1 आवर नेटफ्लिक्स हर दिन ताकि मेरे को स्टडी लीव में भी ऐसा ना लगे मैं कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहा मतलब प्रोडक्टिव है नहीं कुछ टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है या फिर जो चीजें मेरे को पसंद है वो नहीं कर रहा तो मेरे को उससे कभी ऐसा नहीं लगा कि यार एग्जॉस्ट हो गया दैट अलाउड मी टू स्टडी फॉर अ लॉन्गर पीरियड विदाउट टेकिंग लॉन्गर ब्रेक तो अपना रूटीन में सबसे पहले स्लीप को निकालो सेकंड आप 1-2 आवर्स का अपना चीट आवर जो कहते हैं उसको निकालो एंड देन बैलेंस पीरियड में यू कैन लाइक मैनेज के कैसे पढ़ाई करनी है कितने आवर्स पढ़ाई करनी है एंड आपका एक सेशन कोई ऐसा होना चाहिए which will be the most productive session so if you are a morning person your morning session should be very productive आप किसी दिन नहीं भी पढ़ते ना उस आवर पे जरूर पढ़ना for me that was my night session मैं अगर सुबह से लेकर रात तक नहीं पढ़ रहा मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती थी because I was so confident that मैं अगर रात को 11 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक पढ़ूंगा I'll cover 50% or 60% of my target so that is something which you all can have अपना एक क्रिकेट रिलेटेड टर्म पावर प्ले वाला पीरियड ना ढूंढ के रख लेना दैट ये वाला पीरियड तो मेरे को कभी नहीं छोड़ना है आई हैव टू बैक इट अप एंड आप देखोगे वो टाइम पे आपकी एफिशिएंसी आएगी उस टॉपिक उसी पीरियड पे अपने डिफिकल्ट टॉपिक्स लो उसी पीरियड पे अपने मॉक टेस्ट लो एंड you can do that then next thing is how to plan 1.5 days so see 1.5 days में I always say don't call it revision अगर आप पूरा सिलेबस रिवाइज करने बैठोगे ना तो 1.5 days में नहीं हो पाएगी I have had this discussion with शुभांकर जो इस कॉल में बैठा हुआ है so 1.5 days is just आपकी दिल की तसल्ली के लिए रिविजन इवेंचुअली अगर आप कोई पहले चीज पढ़ चुके हो आप एग्जाम में आपको दिखेगी आप उससे सही आंसर करोगे अगर आपको कोई पहले चीज समझ नहीं आई आप उसे 1.5 days में पढ़ के भी चले ना तो भी आप एग्जाम में से गलत करोगे सो 1.5 days रिविजन इज जस्ट फॉर यू टू हैव दैट कॉन्फिडेंस और आपको ऐसा ना लगे टाइम वेस्ट हो रहा है उसमें आप कोई चीज नहीं भी पढ़ के जा रहे हैं ना तब भी आप एग्जाम में से उस कॉन्फिडेंस के साथ जाओ कर लो सर गिव यू लाइक वेरी ब्रीफ स्टोरी मेरे साथ क्या हुआ था इंटर में एडवांस अकाउंट्स के पेपर से पहले एक बार मेरा मतलब होल्डिंग कंपनी एक चैप्टर होता था एंड देन वो चैप्टर के मेरा एक भी क्वेश्चन आई सॉल्व्ड लाइक 12-13 क्वेश्चंस एंड शायद एक सही हुआ था बाकी 12 गलत हुए थे इट वुड हैव बीन वेरी इजी मैं वहां पे डिसअपॉइंट हो जाता क्या कर लेता बट आई लाइक अपीयर्ड इन माय एग्जाम विद कॉन्फिडेंस एंड पता कौन सा क्वेश्चन आया था जो एक सही हुआ था ना वही आया था एग्जाम में क्वेश्चन तो हमें नहीं पता एग्जाम में क्या आने वाला है इवन इफ 1.5 दिन में कोई चीज हमारी छूट के जा रही है डोंट लूज होप अपने कॉन्फिडेंस के साथ पेपर दो एंड यू विल मैनेज देन फिर एक ना एग्जाम खत्म होने के बाद एक बहुत फियर रहता है कि यार रिजल्ट में क्या होगा इवन प्रिपरेशन के टाइम पे भी रहता है बट प्रिपरेशन के टाइम पे तो आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट रिजल्ट के बारे में मत सोचो सर जो होगा देखा जाएगा एग्जाम के बाद बड़ा जाता है दिक्कत तो एंगेज योरसेल्फ इन लाइक अदर एक्टिविटीज अपने रिजल्ट के बारे में मत सोचो आप इतने टाइम से पढ़ते पढ़ते आ रहे हो आप घूमो अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करो सोचो ही मत एग्जाम के बारे में एग्जाम से पेपर आते ही इक्वेशन पेपर को फेंक दो अगर आपको नहीं भी फेंकना कि भाई पेपर साइड में रख रहे हैं डोंट ओपन इट बहुत लोग कोई हैबिट होती है यार आंसर सर्टिफाइड कॉपी या फिर सजेस्टेड आंसर से मैच करेंगे कोई टीचर ने वीडियो डाल दी या आंसर अपने क्रॉस चेक करेंगे दैट वोंट हेल्प यू आपने एग्जाम दे दिया है तो डोंट डू दैट अपने ऐसे आप अपना फियर कम करोगे यू हैव गिवन योर बेस्ट एंड देन वेट रिजल्ट पे आएगा अगर पॉजिटिव है वेल एंड गुड एंजॉय योर सक्सेस नेगेटिव है सी वेयर यू वेंट रॉन्ग so I think this is something which I wanted to tell I think Divesh can now take it up maybe Thanks before a moving lot. to Divesh I have a fun fact to add on so जैसे शुभम बोल रहे हैं ना कि मैं कुछ वीडियोस देखता था या कुछ दिवेश बोल रहा था कि आई यूज्ड टू वॉच सम स्टैंड अप कॉमेडी एंड ऑल सो देयर वाज एन इवेंट वेयरइन ऑल से I did my articleship from PwC, so सारे PwC के rankers को invite किया था वहाँ पे. So we were like a good chunk of people, and they asked us a common thing among us. So we started iterating, and एक conclusion आया. हम लोग सब तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख रहे थे for the complete study leave period. So that is something very common. So ऐसा नहीं है आप डरो मत कि आपने थोड़ा सा time लगा दिया, क्योंकि half an hour का वो refreshment ना वो बहुत help करता है. So that's just it. Divesh, you can continue. Yeah, I think thanks a lot Shubham and Ashish for sharing your views. यार तारक मेहता ही हम लोग प्रमोट कर रहे हैं ऐसा मत सोचना मतलब it could be anything not तारक मेहता but yeah so I think I have a first things first I think few points from what Shubham and Ashish said I'd like to continue and in fact I totally agree with whatever they said. I think सबसे बड़ी और एक चीज हम सबको समझने की जरूरत ये है at least this used to happen with us
कि जब हम सी फाइनल की लीव्स के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, लीव्स में फाइनल के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तब वी यूज्ड टू रिलेट विद आवर इंटर डेज कि यार इंटर में तो मैं कंसिस्टेंटली पढ़ सकता था, मैं 3 महीना करके बाहर ही नहीं निकला था, यार अभी इतना फोकस क्यों नहीं आ पा रहा है. दिस डेफिनेटली आई थिंक अभी नहीं तो एटलीस्ट एक आध महीने बाद यू विल फील, एंड आई थिंक अभी ही यू विल फील, बिकॉज आई रिमेंबर माई अटेम्प्ट वाज इन मे, लाइक ओरिजिनली इन मे. तो आपका जून वाला पीरियड इज मेरा दिसंबर वाला पीरियड. आई थिंक दिसंबर के वन फाइन डे, आई थिंक 15 दिसंबर और डेट पे आई सैट विद अ स्टॉप वॉच. ठीक है, पूरे दिन के एंड पे मैंने स्टॉप वॉच में चेक किया हाउ मच वाज आई एबल टू स्टडी, नेट आवर्स दैट आई वाज इन फ्रंट ऑफ द बुक. उसमें भी इफेक्टिव रीडिंग तो कम होगा, बुक के सामने मैं कितना बैठा था. एंड यू वोंट बिलीव, वो दिन के एंड पे इट वाज जस्ट 5.5 आवर्स, जस्ट 5.5 आवर्स. एंड आई मीन उस टाइम पे आई वाज सो फ्रीक्ड आउट, बिकॉज अपन को लगता है कि पूरा दिन हम बुक के सामने बैठे हैं, हम लोग 10 घंटा 12 घंटा पढ़ते हैं, बट वो फैक्ट नहीं है. इफ यू एक्चुअली वन डे सिट विद अ स्टॉप वॉच, यू विल एक्चुअली रियलाइज, एंड यू मेक श्योर कि स्टॉप वॉच तभी चालू करो जब पढ़ना चालू किया, तभी बंद करो जब, इवन इफ यू टेक अ पॉज फॉर ड्रिंकिंग वाटर, तब पॉज करो स्टॉप वॉच. यू विल रियलाइज एट द एंड ऑफ द डे कि जो आपको 10 घंटा 12 घंटे का इल्यूजन है, दैट इज एक्चुअली इल्यूजन. आई मीन यू एक्चुअली स्टडी फॉर व्हाट 5 6 और 7 hours. And this is one fact that I realized, which to an extent I had realized in inter as well, which I felt कि ये चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि कोई एक्स बंदा आपको बोल रहा है कि मैं दिन के 14 घंटे पढ़ रहा हूँ, लेकिन आप सिर्फ 10 घंटे पढ़ रहे हो, देन इस चीज की आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए कि यार मैं 10 ही पढ़ रहा हूँ, वो 14 घंटे पढ़ रही है, स्टडिंग 1.5 times or 1.4 times of what I'm studying. ऐसा नहीं है. As a matter of fact, a lot of my friends studied probably 14 hours. A lot of my friends studied for 7 hours. And I'll tell you, the fact is, this is the fact, वो 7 घंटे वाले को 14 घंटे वाले से ज्यादा मार्क्स. अब अगेन दिस डज नॉट मीन कि मैं प्रमोट कर रहा हूं कि आप 7 घंटे ही पढ़ो और आपको ज्यादा मार्क्स आएंगे 14 आवर्स से. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज अल्टीमेटली कि द आवर्स इज समथिंग दैट वोंट मैटर. ठीक है, बिकॉज दिस इज अगेन अ कॉमन क्वेश्चन अ लॉट ऑफ पीपल आस्क rankers per se, which I feel honestly the question is wrong, but ठीक है उस स्टेज पे the question is not wrong, but I feel the question is basically because it is very subjective. किसी को उसी चीज को पढ़ने में 2 घंटे लगेंगे, कोई बहुत स्मार्ट होगा शायद, यहाँ कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ चुका होगा, उसको आधे घंटा ही लगेगा. सो यू देयर इज नो बेंचमार्क कि आधा घंटा या 2 घंटा फॉर द कंसेप्ट. So accordingly, there is no particular number. Like Shubham said, maybe let's say put an arbitrary number of say 8 to 10 hours to start with, and going ahead you can increase it. Exam के 1 महीने पहले तक you can come in the range of 12 to 13 hours. Beyond which I think is definitely very difficult. वो सिर्फ एग्जाम के एक दिन पहले ही आ सकता है beyond the number, क्योंकि वो एग्जाम का जब तक प्रेशर नहीं होगा कि नेक्स्ट डे एग्जाम है, तब तक ये नंबर तो नहीं आ सकता. So that is I think one major thing I want to call out. And second is again picking up from where I left, कि हम लोग स्टडी लीव्स में भी कंपेयर विद आवर इंटर. तो मैं ये जो 5.5 घंटे हुआ था, आई वाज कंपेयरिंग विद इंटर, यार तब तो मैं 12 घंटे पढ़ता था, तब तो मैं 10 घंटे पढ़ता था, व्हाटएवर द नंबर इज. एंड देन ओवर अ पीरियड ऑफ माय स्टडी लीव्स आई एक्चुअली रियलाइज कि इंटर इज लाइक अ 100-meter रेस एंड फाइनल इज लाइक अ मैराथन. ये मैंने इन्वेंट किया है, सो credits to me for this. But the point is कि 100-meter race पे you have to start since the very first second, you have to start running with your full potential. But marathon में running fast is not what is important. Running consistently and making sure you finish the race is what is more important. आज आप first month में you can study for 14 hours but then lose interest in studying for the remaining 4 months, उसका कोई sense नहीं है. Because अगर आप exam तक वो एनर्जी को मेंटेन नहीं रखते, then there is no point of it. So make sure you create a difference over here as compared to your inter. आप इंटर वाले फेज में मत रहो कि यार इंटर में तो मैंने इतना किया था, मैं घर से बाहर नहीं निकला था, ये वो इंटर वाला चीज नहीं होना, because that was 2-3 months. Now it is going to be whatever 4 to 6 months, which is huge. So I think this is one major takeaway I will I have to suggest to you all guys. So far as I think consistency is concerned, I think both of them, Ashish and Shubham, have already shared their views, but a couple of things over here. यार देखो कितना भी कंसिस्टेंट रहने का ट्राई करोगे ना, I am telling you there will definitely be a lot of days where you will not feel like studying, and there does not have to be necessarily a reason to it. हाँ, काफी बार ये होता है कि ऑडिट पढ़ा, बोर हो गए इसलिए नहीं पढ़ना है, that is obviously there, but उसके सिवाय काफी बार ऐसे ही बर्नआउट हो जाता है, you don't feel like studying. Honestly, I want to say it out loud, it is okay to take breaks. In fact, I think you should take planned breaks, because वरना actually breakdown हो ही जाता है. So the thing is, anyways, cutting this short, as a matter of fact, I also, and I think there was a point around health issues as well during the study period. And as a matter of fact, I also faced health issues, not say, elaborate health issues, nahi, something as simple as a headache, because you get irritated, etc. So headache hona is pretty normal. So because of which I decided कि यार एक आध दिन पूरा प्योर ब्रेक ले लो, so that I come back to normal and then I get started. So हर एक महीने में let's say एक दिन का break लेना is very normal. You should do it. I think this is so far as the breaks is concerned. Last thing that I want to say is the number of revisions, like Ashish said, totally agree with the 2.5 revisions wala point. I think one thing that I would like to say is my opinion over here was, or rather my thought process was, कि first reading I will do in 90 days.
सेकेंड रीडिंग 90 के आधे में होना चाहिए, दैट इज 45 डेज, एंड थर्ड रीडिंग 45 के आधे में होना चाहिए, विच इज 22.5 डेज, विच इज लेट्स से 20 डेज। तो ये आप टोटल करोगे, इस कम्स टू 155 डेज, 90 प्लस 45 प्लस 20, ठीक है। एंड 156 का डेज जो होता है इंस्टीट्यूट आइडियली देता है। आई नो कि काफी लोग बोलेंगे आई गॉट 4 months of leave, I got 5 months of leave, which again like Shubham said and Ashish said, 4 हो 5 हो, beyond an extent it will not make a difference। 8 महीने वाले भी फेल होते हैं, डमी आर्टिकलशिप वाले भी फेल होते हैं, वर्सेस 3 महीने में भी लोग रैंक लेके आते हैं, एंड प्रॉब्ली वेरी गुड रैंक्स। तो वो नंबर ऑफ लीव से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन नंबर ऑफ रिविजन का जो पॉइंट है, आई टोटली एग्री विद आशीष, 2.5 नंबर ऑफ रिविजन आई थिंक इज द परफेक्ट। एंड ये आप आइडियोलॉजी लगाओ कि अगर आपने फर्स्ट रीडिंग में लेट्स से लॉ को पढ़ने में आपने 10 दिन लिए, तो नेक्स्ट रीडिंग में इट शुड टेक यू 5 days और लेसर, नॉट मोर। क्योंकि मेरा अगेन कमिंग टू दिस, लेट्स से 90 days डिवाइड बाय 8 सब्जेक्ट्स इज व्हाट 12.5, अप्रोक्सीमेटली 12.5 days per subject। अब 12 days per subject कंसीडर करो, नेक्स्ट रीडिंग वुड बी 6 days, नेक्स्ट रीडिंग वुड बी 3 days, उसका नेक्स्ट रीडिंग वुड बी 1.5 day। तो ये 50% वाला लॉजिक इसके एवरी टाइम योर बेसिकली इट्स 100% लर्निंग कर्व, every time your productivity increases and you can do the same thing in 50% of the time। एंड एक लास्ट चीज ये भी था रिटेंशन का अक्रॉस सब्जेक्ट्स के, यार मैंने एफआर थोड़े दिन पहले पढ़ा, अब ऐसे टाइम पढ़ रहा हूँ एफआर में भूल गया, उसका वन पॉइंट है इसके, यार देखो ये तो होना ही है। This will especially happen with subjects like audit, जो 5 मिनट बाद भी आप भूल जाओगे, and even subjects like FR, which is going to happen। I think the only key to this is कि वो एक बार सब्जेक्ट कर लिया, ट्रस्ट योरसेल्फ कि आपने करते टाइम अच्छे से किया है, देन उसके बाद नेक्स्ट डे वही चीज को रिवाइज करने की जगह आई विल सजेस्ट नेक्स्ट रिवीजन में उसको अच्छे से करो। द नंबर ऑफ टाइम्स यू रिवाइज, आई थिंक ये जो 2.5 रिविजन एंड अगेन 1.5 डे में जो यू विल रीड 1 day before exam, I think this is what will definitely make you remember things and trust the process। फर्स्ट रीडिंग में you will feel very nervous, यार इतना बड़ा कोर्स है कुछ याद नहीं है, लेकिन सेकंड रीडिंग में आपको चीजें याद आती रहेगी, एंड थर्ड रीडिंग में तो डेफिनेटली you will feel that now you are well prepared। वो प्रीजज मत करना अपने को कि right now I'm not able to like recall things। I think that's what I want to say।